Hello everyone, my name is Rimpe Samria and welcome to my channel. Dear friends, today we are going to understand the question answers of poem My Only Cry, Close the Arm Factories. So without any delay, let's start. Our first question here says, what kind of poem is it? ये poem किस तरह की है? And the options given here are a humorous criticism or a touching appeal. So the answer is a touching appeal, जिसमें कि एक बच्चा अपील कर रहा है कि हमें आर्म फैक्ट्रीज को बंद कर देना चाहिए. Our second question says, what does right wing politics mean in the last stanza? तो इस पोम के लास्ट स्टैंजा में एक वर्ड है, एक फ्रेज है, राइट विंग पॉलिटिक्स. उसका क्या मतलब है? सो द ऑप्शन गिवन हियर आर reactionary politics, conservative politics, both A and B, and none of these. So the answer here is both A and B, in which it has reactionary politics as well as conservative politics. Now let's see question number 3. Here it says, describe in your own words what the poet wants to convey to the adults. Do you agree with the poet? Give reason for your answer. तो आपको ये डिस्क्राइब करना है अपने शब्दों में कि जो पोइट है वो अडल्ट्स को, ग्रोन अप्स को क्या मैसेज देना चाहता है और क्या आप पोइट से अग्री करते हैं. आपको अपना रीज़न देना है. सो द आंसर हेयर इज द पोइट हैज़ मेड एन अपील टू द अडल्ट्स टू प्रिजर्व द नेचर एंड अवॉइड यूजिंग वेपन्स इन द वॉर as it destroys the place and affects the future generation. तो पोइट जो है वो यहाँ पर अडल्ट से ये अपील कर रहा है कि हमें अपने नेचर को प्रिजर्व करना है, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करना है. हमें वेपन्स को अवॉइड करना चाहिए यूज़ करने के लिए किसी भी वॉर में, क्योंकि ये उस प्लेस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को भी इससे नुकसान होता है. And yes, I agree with the poet. We are destroying each other through destruction. If we stop all the violence, we can create a better world to live in. और हाँ, हम एग्री करते हैं पोइट से यहाँ पे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं हर जगह. और अगर हम स्टॉप करते हैं ये वायलेंस, अगर हम रोक देते हैं, तो हम एक अच्छी दुनिया बना सकते हैं जिसमें हम सब शांति से रह सकते हैं. The next question says, discuss in pairs. Why do you think the poet calls the world deaf? आपको ऐसा क्यों लगता है कि पोइट ने इस वर्ल्ड को डेफ बोला है, बहरा बोला है? सो द आंसर इज द पोइट कॉल्स द वर्ल्ड डेफ बिकॉज द पीपल आर नॉट स्टॉपिंग द यूज़ ऑफ वेपन्स. पोइट ने इस वर्ल्ड को डेफ इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो वेपन्स को यूज़ करना बंद बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, चाहे जितनी मर्जी उनसे अपील की जा रही हो, जैसे वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो डेफ होते हैं. Next question says, what do you understand by the phrase a veil of dust lies over it? आप इस phrase से क्या समझते हैं कि a veil of dust lies over it? So here the answer is, a veil of dust lies over it means that because of war, the life has become miserable and the liveliness is missing. और यहाँ पे veil of dust lies over it mean का इसका मतलब है कि जो war हो रही है उसके कारण जो लाइफ है हमारी वो मिजरेबल हो गई है, जीना मुश्किल हो गया है, और उसके अंदर जो जिंदा दिली होती है, जो लाइवलीनेस होती है हमारी लाइफ में, वो मिसिंग है. सो दैट्स व्हाई ही हैज़ यूज्ड दिस फ्रेज, अ वेल ऑफ डस्ट लाइज ओवर इट. So guys, these were the question answers here. I'm also going to share with you the back-end exercise of this poem. You can have a screenshot of it and you can use it. I hope that you understood these question answers, and I hope that you liked this video. And if you did, please hit the like button and please share this video with your friends. And now I'll meet you in my next video. Please comment also below that what you liked here and which videos you would like to see in the future. Okay, and please hit the bell icon as well. Now I'll meet you in my next video. Till the time, take care, keep learning, have a wonderful day ahead. Bye bye.